हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुवरिया एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके फर्स्ट यूनिट में से सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी इसका वर्कशॉप देखने वाले हैं। तो फिर चलिए वर्कशॉप की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द वेब डायग्राम। हमें यहाँ पे कुछ वेब डायग्राम्स दी गई है एंड वी हैव टू कंप्लीट इट। फर्स्ट इज अनिल्स वर्च्यूज, helpful, compassionate, forgiving and kind-hearted. Next, Harit's vices, deceitful, lying, helpful and robber. Here we complete the first question. Now move towards the question number second, and what does it says? In question number second, we have to insert the appropriate verb or phrases given below in the sentences that follow. हमें यहाँ पे कुछ sentences दी गए हैं, उनमें कुछ blanks है and we have to fill them with appropriate word or phrase. Okay, so the given phrases or words are flattery, appealing, buffets and starts, dash to, undetached, spirits, roads. First, the dash school gate when I heard the school bell ring. Second, after the death of my pet dog, my spirits rose up when dad got me a new pup. Third one, do not stop to just to flattery get something from someone. Next one, the artist complete his painting by fits and starts. Next sentence, the crime went undetected for all 11 years. And lastly, when the baby saw its mother, it gave an appealing smile. Here we complete the second question. Now move towards the question number 3. Question number 3A, find from the text the कोलैकेशन फॉर द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड्स के लिए कोलैकेशन ढूंढने हैं। फर्स्ट, स्ट्रे डॉग। सेकंड, केयरलेस मैन। थर्ड, टिकट ऑफिस। फोर्थ, वॉक स्लोली। फिफ्थ, लाइट ड्रिजल। सिक्स्थ, होल सेंटेंस। सेवेंथ, रीजन स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बी, कंप्लीट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हमें स्टोरी में से कंपाउंड वर्ड्स पूरे करने हैं। ऑयल, रिच। नेक्स्ट, 50 rupees, easy going, clock tower, moonlight. Next question, question 3C, pick out from the story 3 or 4 examples of code mixing Indian words used in English. तो हमें स्टोरी में से क्या करना है, ऐसे वर्ड्स ढूंढ के निकालना है जो कि कोड मिक्सिंग है, मतलब अदर लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स होते हैं अगर हम इंग्लिश में यूज करेंगे या दो से तीन लैंग्वेजेस एक जगह पे करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, कोड लैंग्वेज, कोड मिक्सिंग कहा जाता है। एंड इस चैप्टर में भी आपको कोड मिक्सिंग देखने को मिलेगी और वैसे वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज बाजार, सेकेंड वर्ड इज मैदान एंड थर्ड वर्ड इज पायजामाज। Here we complete the question number 3. Now move towards the question number 4. Question number 4 is read the story carefully and complete the table. हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी केयरफुली रीड करनी है, आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। ओके, सो वी विल फर्स्टली रीड। तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली स्टोरी रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है एंड टेबल में फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नेम्स, एज, फिजिकल अपीयरेंस, अर्न मनी बाय एंड क्वालिटीज। यह सब इस टेबल में मेंशन करना है। Total number of characters 2, names Hari and Anil. Both Hari is of 15 years, Anil is of 25 years. तो जो हरी है वो थिन है, अनिल जो है टॉल एंड लीन है। जो हरी है वो रॉबिंग और स्टीलिंग करके पैसे कमाता था, उसमें ग्रेटफुल, ईगर टू लर्न की क्वालिटीज थी। अनिल was a writer and who is kind, simple, compassionate and forgiving. Here we complete this question. Now move towards the question number 5. Question number 5, complete the given sentences. हमें यहाँ पे कुछ sentences दी गई हैं and हमें उसे complete करना है. So we will do it. First, Anil kept Hari as a cook because Hari needed a job and Anil thought he would be able to teach Hari to read and write in return for the food Hari would cook for him. Second, Hari was grateful for teaching him to cook and write his name. Third, Hari continued making money by making small profits every day while shopping for supplies. Next sentence, Anil didn't hand Hari over to the police. He believed that kindness and compassion would reform Hari. Lastly, the moral of the story is love, kindness and trust have the power to change a criminal into a gentleman. Here we complete the 5th question. Now move towards the question number 6. Question number 6 is think and write in your own words in your notebook.
आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक करना है, सोचना है, उसके बाद आपको आपके खुद के शब्दों में आपके नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अनिल एम्प्लॉय हरी एज अ कुक ऑल्दो ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे हिम? तो अनिल ने हरी को कुक बना के उसके घर में क्यों रखा अगर वो उसे पैसे पे नहीं कर सकता था? आंसर, अनिल kept Hari Singh even though he didn't have money to pay because Hari Singh agreed to cook for him without a salary provided Anil fed him. Next one, what did Hari learn from Anil in the beginning? हरी ने अनिल से शुरुआत में क्या सीखा? आंसर, हरी learned to cook and write his name from Anil at the beginning. Next one, why didn't Anil hand over Hari to the police? What effect wouldn't have had on Hari? तो अनिल ने हरी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इसका हरी पे क्या इफेक्ट हुआ? आंसर, अनिल did not hand over Hari to the police because that would result in Hari's transformation into a criminal from a small time thief. Besides, it would have left a permanent sear on Hari's mind at the tender age he was in. Moreover, Anil decided to be different and reform Hari through kindness and sympathy by forgiving him. Hari had also chosen to return the money by coming back, although he would have easily fled. Next question. Do you feel Anil's way of handling a thief like Hari was effective? Justify your answer. क्या आपको लगता है अनिल जिस तरह से हरी को ट्रीट कर रहा था वो एक थीफ को ट्रीट करने का इफेक्टिव वे है? अगर है तो किस तरह से है, यह आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर, यस, आई फील अनिल हैंडल्ड अ थीफ लाइक हरी एक्सट्रीमली इफेक्टिवली by overlooking his small thefts and concentrating on equipping him with the skills of reading, writing and adding number. Anil was indirectly reforming Hari and teaching him the way to earn a living in a respectful manner. His decision of not handing Hari over to the police was also a wise one, as that would have transformed Hari into a criminal forever. The results are seen in the fact that Hari returns to Anil even after stealing the money because somewhere he feels guilty of his deeds of letting Anil down and the fact that he could earn more in respectful manner. Next question, what tact had Anil used to change Hari's dishonest ways? तो अनिल ने हरी के डिसऑनेस्ट वेज को चेंज करने का कौन सा तरीका अपनाया? Answer, Anil started teaching Hari to write his name and promised to teach Hari to write whole sentence and add numbers. This used a new hope in Hari that one day he would be able to earn more than what he did by robbing. He also decided to pay Hari for cooking as soon as he was able to do so that he doesn't have to steal money. And above all, he blindly trusted Hari, which made it difficult for Hari to rob him and run away. Next question. And the smile came by itself without any effort. Say why? Why do people give fake smiles? आपको लगता है कि लोग फेक स्माइल्स क्यों देते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? Answer, the smile came by itself because Hari realized although Anil knew the truth, he had forgiven him and it was a load off his win. He also knew that was going to teach him to write whole sentence so that he could earn more and give up his dishonest ways. And that was the reason he had returned to Anil in the first places. People give fake smiles either to impress others or to hide their true emotions. Here we complete the question number 6. Now move towards the question number 7, which is a very interesting question. The question is, write a character sketch of Hari Singh with the help of following points using the paragraph format. तो आपको क्या करना है? हरी सिंह का जो कैरेक्टर इस स्टोरी में दिया गया है तो उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको हरी सिंह के बारे में एक पैराग्राफ फॉर्मेट में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हरी सिंह बैकग्राउंड, सेकंड, हिज डिसऑनेस्टी, थर्ड, हिज एस्पिरेशन एंड द फोर्थ, हिज करेज टू चेंज
himself। इसका जो पैराग्राफ फॉर्मेट है वह हम लिखते हैं। हरी सिंह इज अ seasoned small-time thief. He comes across as a manipulative young boy who had cheated his former employers and escaped the police. He speaks lies and takes up a new name to elude the police. He has a specific modus operandi to steal money. He is a perfect example of how old habits die hard. Although he meets a trusting, simpler employer like Anil, he doesn't hesitate to rob him of his money by making a profit of ₹1 daily while buying everyday supplies. He even robs Anil of his money and decides to run away. However, deep down inside, the deceitful young robber is a boy who is willing and open to corrections and who doesn't mind being taught to cook. The eagerness to learn to read and write is what brings him back to Anil. No matter how hard he tries, he cannot bring himself to betray Anil's trust and run away with his money. He misses the conversation with Anil and his friendship with him, which comes across as more valuable to him than the money he steals. He is grateful to Anil for bringing about a change him by educating him. He is also courageous enough to change himself by returning to Anil knowledge very well that if Anil found the robbery, he could get him arrested. Perhaps these qualities are what make him appear more human than criminal in our eyes, as we feel happy to see him reform in the end. And in this way, we have completed the 7th question. Now move towards the question number 8, in which we have to frame WH questions to get the answer underlined below. Change the first person pronoun to the second person wherever necessary. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया हुआ जो पार्ट है वो आंसर आने के लिए हमें यहाँ पे WH क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फर्स्ट, I hurried back to the room. Answer, where did you hurry back? Second, I had made a study of men's faces. Answer, what had you made? Third, I drew them out without a sound. Answer, how did you draw them out? Fourth, the poor man showed acceptance. Answer, who showed acceptance? Next one, and the last one, I made tea in the morning. Answer, when did you make tea? In this way, we have completed the 8th question. Now move towards the question number 9, which is of imagination. आपको imagine करके यह question solve करना है। Imagine that Anil catches Hari red-handed while Hari is stealing the money from under the mattresses. Compose a short dialogue between them, which reflects Anil's shock and Hari's repeated apologies. तो आपको इमेजिन करना है कि हरी क्या कर रहा है। हरी अनिल के मैट्रेस के नीचे से जो मनी है वो चुरा रहा है एंड उसी समय अनिल ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया है। तो उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होगा वो हमें इमेजिन करके लिखना है एंड जो हरी है वो बार बार अपोलाइज कर रहा है, माफी मांग रहा है। तो ऐसा एक कन्वर्सेशन हमें यहाँ पे क्या करना है, तैयार करना है। तो फिर चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर, Anil is fast asleep as Hari enters his room. Hari thinking to himself, I must hurry up if I have to take the 10:30 express to Lucknow. Hari checks whether Anil is asleep and then slides his hand under the mattress. Anil, alarmed by the disturbance, Hari, what are you doing here so late in the night? Hari, no, nothing. I had just come to put the bed sheet. Anil, switching on the light, I can't believe my eyes. Hari, you have tried to steal my money. Hari, no, I'm sorry. I was just... Anil, don't you speak a word. I have almost caught you red-handed. All the while, I thought I would be able to pull you out of your rich, immoral ways, but I was wrong. Hari, no, sir, I'm sorry. I didn't mean to betray you. Anil, how ungrateful can you be? I am shocked. No more than that. I am hurt. I had never imagined that you would pay me back for my kindness in this way. Hari, please forgive me. I could not resist the temptation. I am extremely sorry. I won't do it ever again. Anil, what makes you think I can trust you again? You have disappointed me. I learned today that old habits die hard. Anil sit with his hand on his head while Hari sits by his feet pleading.
and sobbing. And in this way we have completed the workshop. I hope आपको ये ओवरऑल वर्कशॉप समझ में आया होगा। अगर आपको इस वर्कशॉप में कोई भी डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जो अदर वीडियोस है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिख रहे बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वहां पे ऑल कीजिए ताकि आपको वीडियो के बारे में सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी तरह से सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस एक ही जगह पे देखने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, गुरवरिया एकेडमी सर्च कीजिए और हमारा यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। यह एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उसमें मैसेज कीजिए ताकि हमारी टीम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद कर सके। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पे भी जाके आप यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। इस एप्लीकेशन में हमने चैट सेक्शन दिया है जिसके भीतर आप आपके सभी डाउट्स आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे हमारे टीचर्स भी हैं, उनके साथ भी डिस्कस करके आप आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।